जो हम लेते हैं दैट्स वर्क डन बाय फोर्स, वी से कोई भी फोर्स वर्क डन तब करेगी इफ देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं लेता हूँ कि हमारे पास एक बॉडी है जिसपे मैंने फोर्स एक्सर्ट की F इस डायरेक्शन में, and the body displaces through distance s, then we say work is said to be done if there is some component of displacement in the direction of force। अगर ये एंगल थीटा है तो component of displacement in direction of force is s cos theta, so you can say s cos theta, and work done can be written as force into component of displacement in the direction of force। यहाँ आप ऑपोजिट भी ले सकते हो, we exert a force F, component of force in the direction of displacement is F cos theta, and we can say work is F cos theta into S। In both the cases work done comes out to be, because A dot B is AB cos theta, so work done is F dot S। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, F dot S। स्केलर क्वांटिटी है, work done does not depend on the time taken to perform that work, so it's independent of time। तीन तरह से हम वर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? We say if angle between force and displacement is acute, then cos theta will be positive। Negative work means that angle between force and displacement is obtuse। Zero work, work done is said to be zero if अगर परपेंडिकुलर हुआ, और तो एक केस हुआ ना सिर्फ, एक तो ये केस हो गया थीटा 90 तो वर्क डन जीरो, और कौन सा केस बनेगा? फोर्स इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कि आप सिर पे लोड लेके खड़े हो एक जगह पे, सो देन वी से दैट वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन हमेशा फोर्स स्पेसिफिक होता है। फोर्स स्पेसिफिक होता है मतलब एक बॉडी पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो हो सकता है एक फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव हो, एक के कारण नेगेटिव और एक के कारण जीरो भी हो। तो देन वी कैलकुलेट द नेटवर्क। मतलब जैसे मैं लूँ कि मेरे पास एक बॉडी है विच इज स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे मैंने फोर्स एक्सर्ट की है और ये इधर मूव कर रही है। बाकी कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पे? Directing downwards, normal reaction, और एक फोर्स फ्रिक्शन। अब अगर मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन कितना है,
Normal reaction or displacement by angle 90. So work done by normal reaction is 0. Gravity or displacement by angle 90. The work done by gravity is also 0. Force or displacement by angle theta. The work done is positive. Friction or displacement by angle 180. तो हमारे पास क्या बना n और mg इनके कारण वर्क डन 0 है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव है और फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव है. तो जो नेट वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स ने ज्यादा वर्क किया या फ्रिक्शन ने ज्यादा वर्क किया. अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा वर्क करे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर फ्रिक्शन वर्क डन ज्यादा करेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. देन यू हैव वर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. कोऑर्डिनेट फॉर्म मींस अगर आपको एक्स वाई जेड की टर्म में लिखना है, if f is equals to and displacement is then work done is डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ जेड जेड एफ जेड. अगर हमें दिया हो कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स एक्ट की, and it moves from P1 to P2, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2. इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है बॉडी की, s. इसकी वैल्यू क्या है, r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1. R2 minus R1. R2 minus R1 means x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap. And work done जो हो जाएगा फिर that would be fx into x2 minus x1 fy into y2 minus y1 plus fz into z minus z. यूनिट्स क्या होंगे वर्क के, दो तरह की यूनिट लेते हैं, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल. एब्सोल्यूट में दो कैटेगरीज, इसमें भी दो कैटेगरीज. एसआई में वर्क का यूनिट क्या होगा, you can also call it Newton meter. CGS में it's 9 centimeter. Gravitational unit, force का gravitational unit क्या था, force का gravitational unit kgf. This is kilogram meter. ग्राम सेंटीमीटर. This is kgf meter. This is gram force into meter.
ग्राफिकली वर्क डन कैसे निकलता है? Graphically, we say area under the force displacement graph is work done. अगर आपको ऐसे ग्राफ दिए force x इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में? एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया कितना? A1, rectangle का एरिया, and A2 is half base into height. So total work done will be 150 joules. So area under the graph से आप work done निकाल सकते हो. Then you have अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन क्या होगा? इसमें तो हमने सीधा कर दिया एफ डॉट एस. कोई एग्जांपल वेयर वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, कोई एग्जांपल दे सकते हो? वेयर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज वेरिएबल वेरिंग विद पोजीशन. कोई एग्जांपल इसका? कोई एग्जांपल? हमने 11th में डेरिवेशंस किए हैं, वे फोर्सेस वेरिएबल और वर्क डन निकाला. कोई एग्जांपल दो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कि वर्क डन टू मूव अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यूनिट मास को इन्फिनिटी से लेके आए तो फोर्स इज वेरिएबल. एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग वेरिएबल फोर्स थी. एसएचएम में वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द न्यू पोजीशन वेरिएबल फोर्स थी. तो अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? एक मेथड तो सेम ही हो गया. हमने जो पिछला भी एग्जांपल किया उसमें भी फोर्स वेरिएबल थी, 10 से 0 चेंज कर रही थी. One is graphically. Second is divide displacement into number of small displacement. The number of small displacement ds each. Work done for one such displacement. Say dW is equals to, and we assume that F remains constant as the body produces displacement ds. इस small interval में हम force को constant मानते हैं. Total work done निकालना है तो integrate. इनिशियल पोजीशन s1 to s2. और इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास मान लो अब स्प्रिंग है. हमने वर्क डन निकालना है कि अगर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, इनिशियली हमारे पास ऐसे है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लो L0.
तुमने इसको स्ट्रेच करके x डिस्टेंस तक इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है x नॉट तक. Such that its total length is L naught plus X naught. तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे इसमें फोर्स कौन सी एक्ट करेगी और हमें कौन सा वर्क डन करना है. अगर मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ एट एनी इंस्टेंट लेट द लेंथ बी L naught plus X. इन दोनों के बीच की एक सिचुएशन ले ली. When length is L naught plus X, तो restoring force कितनी है स्प्रिंग में. restoring force हुक्स लॉ क्या था. हुक्स लॉ px. तो मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसे स्ट्रेच करने के लिए. एटलीस्ट kx. So we say work done by applied force. Change length from. अभी लेंथ कितनी है L naught plus X. L naught plus X plus dx. तो वर्क डन कितना हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितनी है अगर लेंथ को L naught plus X से बढ़ा के L naught plus X plus dx कर दिया. तो डिस्प्लेसमेंट इज dx only. F is kx, so kx dx cos 0. Total work done. Produce displacement x naught. To produce change in length x naught. Then say W is equals to k constant x raised to power 1 की integration it's x square by 2. It's kx naught square. इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इसमें कोई डाउट. इसको ग्राफिकली करते तो कैसे करते. इसी क्वेश्चन को अगर ग्राफिकली करना जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट F इज इक्वल टू kx. इसका ग्राफ कैसा बनेगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर x नॉट तक इंक्रीज करने के लिए वर्क डन निकालना है तो दिस एरिया because F is equals to kx, so this will be kx naught and work done is area under the graph, half base into height. So दोनों केसेस में वर्क डन आएगा तो सेम हाफ kx naught स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. एनर्जी possessed by body by virtue of its motion. And mathematically we can say that whatever work is done to increase speed from 0 to v, that will be stored in the form of kinetic energy. कि अगर आपकी एक बॉडी रेस्ट पे है उसकी स्पीड को 0 से v तक बढ़ाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो काइनेटिक एनर्जी है. तो हम दो केस कर सकते हैं. एक हमने स्पीड को 0 से v तक बढ़ाया
बाय कांस्टेंट फोर्स, और दूसरे केस में 0 से v तक बढ़ाया है, फोर्स इज वेरिएबल। तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर हमने स्पीड को 0 से v तक बढ़ाना है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कितना होगा? और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होगा? बस ऐसे सिस्टम है। एक बॉडी को ए से बी तक लेके गए, मैं अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, इधर इसकी स्पीड v है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो Fs cos 0 means Fs is ms, मास इनटू एक्सेलरेशन। a की वैल्यू क्या होगी इस केस में? a can be written as v square minus u square by 2s। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u को सीधा पुट करते हैं तो w comes out to be, and we say this work done will be stored in the form of kinetic energy। अगर वेरिएबल फोर्स है तो कैसे करोगे? अगर फोर्स वेरिएबल है तो we can say first we find work done for small displacement, सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल है। तो F डॉट S नहीं कर सकते, we have to divide the interval into small parts। Work done for small displacement is F dot ds m dv by dt dot ds। Force and displacement are in same direction। So we can write W is equals to dW is equals to ds by dt is velocity। So this is work done। Work done to increase the velocity from v to v plus dv। 0 से v तक बढ़ाना है तो कैसे कर देंगे? अगर 0 से v तक बढ़ानी है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, v dv की इंटीग्रेशन v dv की इंटीग्रेशन square by now। और 0 से b, so get m अब इसको अगर u से भी कर दोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगी। मतलब इस डेरिवेशन में भी अगर हम देखें कि अगर u को हम 0 नहीं लेते तो w comes out to be half mv square minus half mu square, और इधर भी अगर लिमिट्स u से v लोगे तो इट विल बी half mv square minus half mu square। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आए तो आप इससे कर सकते हो। लाइक इसमें अगर मैं लेता if initial velocity is u, तो ये रिजल्ट क्या आता है? s कैंसल, w is equals to
mv square minus u square by 2 और w is equals to work done is equals to change in kinetic energy. इधर भी हम यही करेंगे कि अगर मैं लिमिट 0 से v ले लूं so u से v this will be w is equals to half mv square minus half mu square. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगी वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देन यू हैव पावर क्या होता है इसको वैसे वर्क एनर्जी के एक और वे में भी देख सकते हो आप. अगर मैं पूछूं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर क्या होगा dk by dt. Kinetic energy is half mv square, so we can say d by dt of half mv square. इसकी इंटीग्रेशन so differentiation half m constant है v square is 2v into dv by dt. mv into dv by dt. so यहाँ से वर्क एनर्जी कैसे प्रूफ कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम. अगर इससे प्रूफ करना हो तो कह सकते हो v को हम क्या लिख सकते हैं v कैन बी रिटन एज so I can write this as m into dv by dt into ds is dk. ऐसे लिख सकता हूँ एक dt कैंसिल कर दिया मैंने. dv by dt is 8 so dk is equals to ma ds. दोनों and this is f. इसका फिजिकली मीनिंग क्या बना that small work done is equal to change in kinetic energy dk. इंटीग्रेट कर देंगे तो you will get final minus initial kinetic energy is equals to integration of f dot ds. इस फॉर्म में भी आप प्रूफ कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम को. इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ तो then you have potential energy. Potential energy क्या होता है potential energy possessed by virtue of its position. It can be energy stored in a spring, it can be potential energy stored in a gravitational field, potential energy of charge in electric field. So normally हम लेते हैं कि it's energy stored in a system. Mathematically हम लेते हैं that work done against conservative force, work done by conservative force नहीं, work done against conservative force to move from reference position to the new position. रेफरेंस पोजीशन से न्यू पोजीशन तक लेके जाने का जो वर्क डन होगा दैट मींस वर्क डन डिपेंड्स कि हम रेफरेंस पोजीशन किसे मानते हैं. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग आ सकता है. आप रेफरेंस पोजीशन किसको मानोगे उसके हिसाब से. जैसे हमने ग्रेविटेशन में जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो रेफरेंस पोजीशन क्या ली थी
जब फॉर्मूला ड्राइव किया था -g(m1m2/r). We assume reference position to be infinity. तो infinity से किसी पॉइंट तक लाने का वर्क डन वो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली। जब mgh ड्राइव किया तो रेफरेंस पोजीशन किसे माना? जब mgh का फॉर्मूला ड्राइव किया तो हमने रेफरेंस पोजीशन एज्यूम किया सरफेस ऑफ अर्थ को। तो अर्थ से हाइट h तक लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन आल्सो, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम आएगी। एनर्जी possessed by virtue of its position। लाइक अगर हमने mgh ड्राइव करना है तो हमने सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस मान लिया। वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, इसको ऊपर मूव करना है तो यू हैव टू अप्लाई एटलीस्ट फोर्स इक्वल्स टू mg इफ यू वांट टू मूव इट विदाउट एक्सेलरेशन। तो इज अ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। There is potential energy. So applied force is at least mg into s, and we said this work done is equals to potential energy of the body. So work done to move from reference position to new position against conservative force. Reference position to new position. That will be the potential energy. Units क्या होंगे kinetic और potential energy के? Same as that of work. जो work के unit है वही kinetic और potential energy के भी होंगे. So joules in SI, ergs in CG, similarly gravitational units भी same. कन्वर्जन याद रख सकते हो 1 joule is 10 raised to the 7 ergs। and ऐसे एब्सोल्यूट यूनिट प्रेफर होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। Which of the two units are preferred, SI units or gravitational units? Absolute units। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम ही होता है। Because gravity की वैल्यू अलग अलग होती है। नॉर्मली जैसे हम फोर्स में लेते हैं, जैसे 1 kgf is equals to g न्यूटन। अर्थ के लिए g की वैल्यू हमें पता है 9.8, तो हर जगह g की वैल्यू डिफरेंट होगी तो कन्वर्जन भी डिफरेंट हो जाएगी। सिमिलरली वर्क में भी बिकॉज हम लेंगे कि 1 kg मीटर इज g जूल्स। अब g की वैल्यू डिफरेंट है तो kgm की वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगी। So gravitational unit depends on the value of g at a place. So that's why absolute units are preferred. Earth के लिए हम conversion याद रख सकते हैं। For Earth we can say 1 kgf is equals to 9.8 Newton. But different जगह पे g की वैल्यू डिफरेंट होगी तो 1 kgf की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। So that's why we preferred absolute units rather than using gravitational units for measurement of work or force.
बट अदरवाइज अब आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन होती है इट्स 1 kgm इज इक्वल्स टू g जूल्स। या अगर हम इसको लिखें अर्थ के लिए 1 kgm is 9.8 joules and 1 gram centimeter is 980 ergs। इस अर्थ पे CGS में G की वैल्यू 980 होती है, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम। तो ये वाला पार्ट पढ़ के देख लो, फिर आगे करते हैं इसके नेक्स्ट में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल। अगर कॉम्पिटिशन में थर्मोडायनामिक्स के डाउट्स लेके आ सकते हो सेकंड असाइनमेंट के, नहीं तो मैं करा दूंगा उसके जो डाउट्स होंगे सेकंड असाइनमेंट थर्मोडायनामिक्स। बट अभी 9:30 के आगे करेंगे मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल मेनली, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो मेनली डेफिनेशंस ही हैं।